Today we will learn about asteroids, comets, meteors, satellite, and destinies in space. Students, the word asteroid means like a star. Students, asteroids are major planets, especially of inner solar system. Large asteroids have also been called planetoids. Students, asteroids रॉक, मेटल और अदर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं. सम इवन कंटेन वाटर. स्टूडेंट्स, एस्ट्रॉइड्स की जो कंपोजिशन है वो 3 टाइप से मिलकर बनती है. सी टाइप, एस टाइप एंड एम टाइप्स. Students, C-type asteroids are mostly consist of clay and dry in appearance. S-types stony are made up of silicate material and nickel iron. And the last, the M-types are metallic. There are a lots of asteroids in our solar system. Most of them live in the main asteroid belt, a region between the orbits of Mars and Jupiter, called asteroid belt. Students, asteroids सन को हिट नहीं करते बल्कि ये सन के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग करते हैं, राउंडिंग होते हैं. स्टूडेंट्स, सोलर सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो सन को हिट कर सके, नुकसान पहुंचा सके. एवरीथिंग इन सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स द सन. स्टूडेंट्स, एस्टेरॉइड्स राउंड शेप में नहीं होते हैं बिकॉज दे आर फेसिंग मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर. इट मे बी द प्रेशर ऑफ सन, may be pressure of gravity and so on. That's why they are not in a sphere shape. The mass of all asteroids is less than of Earth's moon, 6.3 million kilometers from Earth. Hence, there are the 4 largest asteroids. Students, now we are going to discuss about comets. What is comet? A celestial object consisting of nucleus of ice and dust. Students, do you know the first female who discovered a comet? Who was she? She was Caroline Herschel. It is an icy small solar system body. When passing close to the sun, warms and begins to release gases. Strange, a process called outgassing. This produces a visible atmosphere. Strange, comets are snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun. Strange, when a comet's orbit bring it close to sun and then it heats up. Strange, comets are basically material from billions years ago when stars and planets were being formed. Strange, 200 years में सन के गिर्द एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है. हेलिस कॉमेट सबसे ज़्यादा फेमस कॉमेट है जिसको सेंचुरी से बुक्स में मेंशन किया गया है. फ्रेंड्स, कॉमेट देखे जा सकते हैं. 16 years before a comet was seen in 1986. Friends, now let's know about meteors. Meteors are the breaking off from an asteroid. Meteors स्मॉल बॉडी मैटर ही जो अर्थ की सरफेस में आउटर स्पेस से इंटर होते हैं. दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. शूटिंग स्टार्स स्ट्रेंड्स वो उन्हें कहते हैं जो स्टार्स ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं. टूटे हुए स्टार्स को शूटिंग स्टार्स और फॉलिंग स्टार्स कहा जाता है.
So, Meteors is a shooting star. Meteor in space that collides with the Earth's atmosphere reaches to the Earth's surface. This is called meteoroids. Strength meteors 30,000 माइल पर आवर की स्पीड से अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं और जब उनका जो टेम्परेचर है वो 3000 फ़ारेनहाइट और 1648 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत से मेटेरॉइड्स हैं वो रेत के ज़र्रात के बराबर होते हैं। मेटेरॉइड्स आर स्मॉल देन एस्टेरॉइड्स। स्ट्रेंथ जैसा कि हम सुनते हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर विशेष करनी चाहिए या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंस। Shooting a star that makes wishes come true is just a result of personal experience. One is lucky to see shooting star. Strange, they are not rare, but it is visible in the dark night when the sky is completely black. स्ट्रेंज जो टूटते हुए तारे हैं, शूटिंग स्टार्स हैं, वो डेली बेसिस पर ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये विजिबल ये देखी नहीं जा सकते बिकॉज जब स्काई बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक हो तो ये जब ही विजिबल है, अदरवाइज दे आर नॉट विजिबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेट्योर्स अर्थ की सरफेस को टच करते हैं हाई स्पीड के साथ एंड देन दे बर्न अप। इन द रिजल्ट शूटिंग स्टार आर रिजल्टेड। Friends, now let's know the difference between meteors and meteoroids. When a meteors enter Earth's atmosphere at high speed and burn up, the fireable balls or shooting stars are formed and they are called meteors. Strange, on the other hand, meteoroids. When meteoroids survive a trip through the atmosphere and hits the ground surface of the earth, it is called meteoroids. Strange, millions of stars अर्थ की सरफेस पर रोज़ाना एट डिस्टेंस विजिबल होते हैं 50 to 95 किलोमीटर from the earth. Strange, now know about what is satellite. Strange, a satellite is a moon, planet or machine that orbits a planet or stars. Strange, usually the word satellite refers to a machine that is launched into space and move around or another body in space. Strange, natural satellites are moon, earth, which rotates around the sun. Moon rotates around the earth. Strange, an artificial body placed in orbit in order to collect information. Strange, the first satellite was launched by Soviet Union, Russia. World's first artificial satellite, which was named as Sputnik in history of satellites since the launch of first satellite from 1957 to 2018. 8,378 satellites have been sent to space. 4,994 satellites are still present in the orbit. In-mate satellite is a machine which is orbiting the planet or sun. And strange, the natural satellites are Earth, Moon, planets which are orbiting also the sun. Strange, बहुत से रोवर्स स्पेस की सरफेस पर पहुँचे मून और मार्स की और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए डस्ट रॉक्स के and they took a photographs. Strange, according to the observation,
such as the Hubble Space Telescope observe the universe. The Hubble sends the huge amount of scientific data and very detailed photographs of every type of object in the sky. Strange galaxy is a collection of millions of stars, gas and dust जो एक साथ मिलकर कैलेस्ट्रल बॉडी बनाते हैं. Strange sun, moon, star, earth and planets are celestial bodies. Strange जो मिल्की वे है, गैलेक्सी का जो सेकंड नेम है वो मिल्की वे है. Strange द मिल्की वे is organized into spiral arm of gain stars. एक बहुत सारे स्टार्स के साथ मिलकर मिल्की वे बना है. वो स्टार्स एक बड़ी तादाद में गैस और डस्ट पार्टिकल्स को रिलीज करते, इल्यूमिनेट करते हैं. स्ट्रेंथ इवेंचुअली ये जो ग्रुपिंग है स्टार्स की एक साथ मिलती है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन है इनको आपस में कंबाइन करती है एंड देन स्टार स्टार्ट्स टू स्पिन अराउंड द सेंटर ऑफ मास. और फिर जो स्टार्स हैं वो सेंटर में राउंड करने लगते हैं, स्पिन करने लगते हैं. Our Milky Way galaxy is one of these spinning. Its entire disk of stars, gas and dust is rotating at around 168 miles per second in the neighbor of Sun. Strange, what is the most powerful thing in the universe? Explosion generates beams of high energy radiation which is known as gamma rays. They are the powerful radiation which reaches to the earth's surface and harmful for the people of earth and animals also. Friends, now know about the distance in space. Friends, दुनिया बेइंतहा बड़ी है, अनकाउंटेबली हम लोगों की सोच से भी बढ़कर. कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं, उनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो मेजर नहीं हो सकता बिकॉज दे आर वेरियस कैलेस्ट्रल बॉडीज़ स्ट्रेंज present in universe. These distances cannot be calculated by kilometer. That's why scientists use a unit of measurement, a light year. From this, स्ट्रेंज ज़मीन के करीब तरीन जो स्टार्स हैं उसका फासला ज़मीन से 3.5 लाइट ईयर है. अगर कोई भी इस स्टार पर जाना चाहे एरोप्लेन के ज़रिए तो उसे कम से कम 50,000 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करना पड़ेगा. हज़ारों साल लग सकते हैं तकरीबन स्टार तक पहुंचने में. सो इमेजिन सेलेस्टियल बॉडी के दरमियान जो स्पेस है वो कितना होगा. Friends, this is your assignment. Do it after watching the video.